Good afternoon, everyone. How are you today? I hope all of you are fit and fine, healthy, okay? Studying a lot, paying a lot of attention, okay? All right. So today we are going to do a couple of exercises and we will also do a small topic related to time, how to tell the time. So that we are going to do in today's class. And before we continue, I just want to ask you, are you practicing? Are you making sentences? Are you asking questions? Are you trying to record your voice and listen back to your voice? Now, what do I mean by voice? It means you are making some sentences, you are asking some questions, you are recording yourself, and then you are trying to listen back. Okay. And that way you are practicing. So if you practice that way, it will help you in many ways. It will help you with pronunciation also. You would be able to pay attention to the words that you pronounce. Sometimes you pronounce properly, sometimes you don't understand how to pronounce some of the words. Where you think that you are not able to understand, then you have to write down those words in your notebook, and then you have to find out how to pronounce those particular words. So you have to pay attention to the pronunciation also. That is also important part. Okay. And this you can understand just by recording yourself, because if you are standing in front of mirror, because most of the times I ask you to stand in front of mirror and make sentences and say something. If you do that, very good. But if you are not recording that part, so you would not be able to listen back. And that is important in terms of understanding that how you speak, what kind of questions are you asking, and the way you are answering those questions. So in order to understand all those things, recording is the best option. Okay, so you can do that, and it's very easy, right? You have a mobile phone, you can use the voice recorder option, and you can do that. And if you want to make your video, you can do that, and that would be icing on the cake. Whoa, better hoga, उससे भी better. But if you don't have time, so at least once in a while, record yourself and then listen back to that. Okay. So we've been doing a different exercises in the class, and these exercises are very important. So you can review these exercises from time to time whenever you get some time. I also give you some questions, some random questions where you can answer those questions. You can just give answers as quickly as possible after reading that question. And that is also a good way to practice your questions, to practice your answers. And in the last class, we also discussed that it's important to ask questions. Questions पूछना भी बहुत important है, and that is somewhat difficult also, because mostly you listen to the question, and when you listen to the question, you get a sort of hint. Okay, this is the question, and I will answer like this. Okay. But asking question is very important, because if you don't ask question, right, then you will not be answering questions all the time. You need to ask questions also, so that you can take the conversation in proper direction, right? So that way we speak, that way we do conversation. So take care of all these things. In बातों को ध्यान में रख के keep on practicing. Okay, so we've been doing different structures. So far, we have completed verb to be different sentences, different structures. Then we did possession, different sentences, different structures. Then we also saw the usage of there and it as subject. So you are getting ideas related to sentences, related to different structures. So now you have to make sure that you are using all these sentences continuously, regularly, so that you are getting habitual of using these sentences, of making sentences with these different structures. So you are somewhat comfortable in terms of understanding, in terms of making sentences. And remember, very important point that
you have to try to do less translation. ट्रांसलेशन जितना कम करेंगे कोशिश करने की उतना ज़्यादा बेटर रहेगा. ओके, सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करना है, हाँ कर सकते हैं ट्रांसलेशन, बट नॉट ऑल द टाइम. ऐसा नहीं कि सारे ही टाइम ट्रांसलेशन हो रहा है पहले एंड देन फिर आप उसको ट्रांसलेट करके सुन. Okay, don't do that because it's not a good habit. And that's why it's important to think in English. अगर आपने अपनी हैबिट डाल ली इंग्लिश में सोचने की, थोड़ा सा ये जो पॉइंट है इंग्लिश में सोचने का, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि इंग्लिश में सोचना व्हाट डज इट मीन. इट सिंपली मीन्स जैसे आप हिंदी में सोचते हैं, राइट? सो when you want to ask anything, you think in Hindi, and then you say something, you ask something in Hindi. In the same way, you have to think in English. Now, what it means? It means that if you want to ask any question, you will not translate that question in your head before speaking. You will try to directly ask that question without translation. Okay. If you are listening to any question, then you will try to answer that question directly, jitna jaldi ho sake, without thinking in Hindi that what is the meaning of this question. Okay, like that. What if I want to say this, then this is the sentence in Hindi, and then you are translating it into English, and then you are trying. वो हमको कम करना है. ओके, एंड ये आपको हैबिट डालेंगे जब ऐसा होगा. अदरवाइज हैबिट नहीं डालेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो वो फिर ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा दैट यू आर फर्स्ट यू आर थिंकिंग इन हिंदी एंड देन इंग्लिश एंड देन इंग्लिश एंड देन हिंदी. सो ये ऐसे ही चलता रहेगा. सो इस हैबिट को रोकने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा के यू आर थिंकिंग इन इंग्लिश, ओके, एंड देन यू आर ट्राइंग. ओके, सो ये आपको सब चीज़ें करते रहना है, रेगुलरली करना है, कंटिन्यू करना है. एंड वेन एवर यू डू ऑल दीज एक्सरसाइजेस, you have to be happy hona hai that yes, I am practicing. You have to motivate yourself that yes, I am making all these sentences, I am asking questions. मिस्टेक्स हो रही हैं, होने दीजिए उन्हें. मिस्टेक्स तो होंगी क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं. ओके, आप सीख रहे हैं तो मिस्टेक्स तो होनी है. सो मिस्टेक्स से आपको demotivated nahi hona. You don't have to think like that I'm thinking like this, I'm not able to make sentence, I'm not able to ask question. You don't have to think that way. You have to think that yes, I am trying, right? I'm getting something, I'm able to ask some questions, I'm able to answer some questions. Because learning, if learning spoken is a sort of slow process, थोड़ा सा slow process है, right? And definitely you see the result, you get the result if you continuously put efforts. लेकिन उसके लिए जरूरी है continuously efforts लगाना and थोड़ा सा इसको seriously लेना. Seriously in the sense that when you are listening to this class, okay, when you are doing exercises from this class, when you are answering questions from the class, after that also you have to take out 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. It depends on you. जितना ज़्यादा आप टाइम निकाल सकते हैं निकालिए, प्रैक्टिस करिए, सेंटेंसेस यूज करिए, क्वेश्चंस बनाइए, थिंक एंड स्पीक. ओके, डिस्क्राइब थिंग्स, डिस्क्राइब करिए चीज़ों को, राइट? डिस्क्राइब योर रूम. ओके, सो डू ऑल दीज थिंग्स. ये धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाएंगे एंड देन यू विल फाइंड ऑल दीज थिंग्स वेरी इजी, राइट? फिर आपको इजी लगने लगेगा. ओके, सो अभी जो पॉइंट्स डिफिकल्ट लग रहे हैं इन ऑर्डर टू say something, in order to ask something, they will be easier, but with the help of practice. ये सब practice के साथ होगा. Okay, so keep all these things in your head. चलिए, so my question is, uh, which day is it today of our class? जल्दी से बताइए. Yes, today is 13th day, and ये जो 13th day है, इसमें आप अपनी 12 डेज की जर्नी को देखिए. 12 डेज की जर्नी को आप थोड़ा सा एनालाइज करिए कि ये जो 12 डेज हमारे निकले क्लासेस के, इसमें हमारी क्या लर्निंग हुई, हमने क्या समझा, क्या सीखा, एंड वो क्या सिचुएशंस हैं जिनमें अब हम कंफर्टेबल हो गए हैं, हमको अंडरस्टैंडिंग हो गई है, हमको नॉलेज हो गई है, एंड हम उन सिचुएशंस को यूज करके मेकिंग सेंटेंसेस.
आस्किंग क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस बना रहे हैं, सेंटेंसेस पूछ रहे हैं, राइट, सेंटेंसेस क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हैं। सो वो 12 डेज को एनालाइज करिए, राइट। इसलिए ये हम डे वाइज जो बात होती है कि आज ये डे है, आज ये डे है, क्योंकि हमको नंबर ऑफ डेज में ये एनालाइज करना है कि हमने इतने दिन में क्या क्या सीखा, क्या क्या सीखने के बाद हम उसको, उन पॉइंट्स को, उन स्ट्रक्चर्स को, उन सिचुएशंस को कंफर्टेबली यूज कर पा रहे हैं। सो जैसे ये क्वेश्चन आता है कि कंफर्टेबल होना, कंफर्टेबल होने के लिए डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप ट्राई करेंगे, उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल होते रहेंगे। ओके। सो ये एक बड़ा पॉइंट क्लियर है कि हमको ऐसा समझना है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई सिचुएशन समझी, ओके, एंड नेक्स्ट डे से वो एकदम परफेक्टली आने लगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा। और उसके लिए क्या कंडीशन है कि आपको ट्राई करते रहना है। जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती रहेगी। ओके, चलिए, अब बताइए कि लास्ट क्लास में जो हमने एक्सरसाइज देखी थी आप लोगों ने, जिसमें मिक्स सेंटेंसेस लिए थे, हमने 3 टॉपिक्स लिए थे, वो एक्सरसाइज आप लोगों ने कर ली है। ओके, जल्दी से हम उस एक्सरसाइज को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ओके, आंसर्स आप लोग रिव्यू कर लेंगे। दिस वाज द एक्सरसाइज दैट आई showed you in the last class, and I asked you to complete this exercise of these different parts, from a verb to be, possession, there as a subject, it as a subject, and there were different sentences from 3 situations: present, past, future. So जल्दी से हम ये sentences देख लेते हैं। Okay. आप लोग जल्दी से चेक कर लेंगे। So for example, the first one was related to present situation. Okay. Hmm. Okay, I was going to write capital I. Okay, so small I. Yes, he is. All right. Present situation. I'm sure कि आप लोगों ने सभी blanks फिल करे होंगे, परफेक्टली फिल करे होंगे, करेक्टली फिल करे होंगे। Okay, all right. So that's how you are going to complete these parts related to present situation. Just check your answers. If there is any confusion, then you will get the idea. It as a subject, it as a subject. ओके, जैसे हमने डिस्कस किया था कि डेज के साथ, वेदर के साथ हम इट एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे। सो इट एज ए सब्जेक्ट, एंड फिफ्थ सेंटेंस में हमने देयर एज ए सब्जेक्ट यूज करा है। ओके, सो जब ये आप सेंटेंसेस, जब भी कहीं पे भी आप रीडिंग कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं, तो उन पे ध्यान दीजिए कि यस, दीज सेंटेंसेस आर कमिंग लाइक दीज। ओके, सो जब ध्यान देंगे, सो यू गेट द क्लैरिटी ये सेंटेंसेस कैसे यूज हो रहे हैं। सो सुनना भी इम्पोर्टेंट है, रीडिंग भी इम्पोर्टेंट है, एंड ऑफ कोर्स स्पीकिंग तो है ही। चलिए, देन पास्ट सेंटेंसेस, बिकॉज पास्ट है। ओके, लाइक दिस। ओके, we can also use short forms. All right, so when you are completing the different parts related to the situation, okay, so you should get the idea, you should get the idea that what to use, what to say as quickly as possible. जितना जल्दी क्लिक होगा, उतना ज्यादा आपको ये समझना है कि हाँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। राइट, तो जितना जल्दी आपको क्लिक हो रहा है कि ओके, दिस इज द सेंटेंस, दिस इज द सिचुएशन, सो इट विल बी कंप्लीटेड लाइक दिस। पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिचुएशन,
yesterday, and again we are using there as subject here, but about the past situation. It was warm last week. It was warm last week. Okay, so that's how you have completed sentences related to past situation of mixed structures: verb to be, possession, and there as a subject, it as a subject. Now there were some future related sentences because situation is future, so you will complete these parts related to future situation. So for example, if you read this question, so you will complete it like this. So there are different structures. ये आपको एकदम से click होना चाहिए sentence पढ़ के how to fill missing parts, what will come in these missing parts. Because question is about tomorrow, so tomorrow it means future. So जल्दी से ही click होना चाहिए, oh this is tomorrow, so I will use the future situation here. So you are thinking about future here and you are talking about future. My school will be very big and it will have a big ground. Okay, because future की बात हो रही है ना, मेरा स्कूल बहुत बड़ा होगा. You are thinking about future and you are saying it will have a big ground. उसमें एक बड़ा सा ground होगा. You are talking about future. Okay. How did you fill this part? How did you complete this question? Did you complete it like this? Will it be Wednesday tomorrow? Will it be Wednesday tomorrow? So you are asking question about tomorrow. So future and with the help of it. Will it be Wednesday tomorrow? Okay. And this is a positive sentence. It will be cold next week. Okay, again, you are talking about cold. Okay, you are talking about future. So how will you complete? You will use it as a subject. It will be cold next week. Okay. So that's how ये sentences हम complete करेंगे about different situations. So इस exercise में हमने जो parts किए हैं उसमें सारे तो पार्ट्स में जितने भी सेंटेंसेस होना चाहिए वो तो सारे हमने नहीं किए यहाँ पे ट्राई, लेकिन हाँ उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जिसमें हम ये समझ सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमको कितनी जल्दी क्लिक हो रहा है सेंटेंस पढ़ के कि यहाँ पे ये पार्ट होना चाहिए, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर यूज होना चाहिए. ये सेंटेंस हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट और टॉकिंग अबाउट पास्ट और टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. ओके, सो यहाँ पे इस एक्सरसाइज के थ्रू आपको ये अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है कि आप जब सेंटेंस पढ़ रहे हैं या क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स इनकम्प्लीट है, कंप्लीट तो है नहीं, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो उसका आंसर हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कितनी जल्दी आपको क्लिक हो रहा है कि दिस सेंटेंस विल बी कंप्लीटेड लाइक दिस. आई विल यूज दीज पार्ट्स इन दीज मिसिंग पार्ट्स. यहाँ पे मिसिंग पार्ट्स में ये पार्ट्स यूज करना है मुझको, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट करना है बिकॉज इट इज अबाउट फ्यूचर सो दिस विल कम, बिकॉज इट इज अबाउट प्रेजेंट दिस विल कम. सो ये कितनी जल्दी आपको क्लिक करना है या कंफ्यूजन हो रहा है आप, कैसा कंफ्यूजन के अब एकदम से समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या मुझे मिसिंग पार्ट्स में फिल करना है. ओके, सो ये कंफ्यूजन हो रहा है तो जल्दी से स्ट्रक्चर्स को रिवाइज करेंगे. स्ट्रक्चर्स को रिवाइज करेंगे इट मींस अभी स्ट्रक्चर्स थोड़े से क्लियर नहीं है. अगर क्लियर नहीं है तो वो एकदम से क्लिक नहीं हो रहा है आपको. अब ये जो बात हो रही है बार बार क्लिक होने की, क्लिक होने की, ये क्लिक आपको जब होंगे जब आप रेगुलरली इनको यूज करते रहेंगे. सो इसलिए इम्पोर्टेंट है सारे स्ट्रक्चर्स को यूज करते रहना, उनको प्रैक्टिस में लेके रखना कि आप उनको बार बार यूज कर रहे हैं तो मतलब यूज कर रहे हैं तो मतलब प्रैक्टिस हो रही है. फिर हमको डेफिनेटली कुछ और तो करने नहीं है बिकॉज यू आर ऑलरेडी मेकिंग क्वेश्चंस, गिविंग आंसर्स, तो वो आपकी एक नेचुरल प्रैक्टिस हो रही है. एंड जब वो प्रैक्टिस होती रहेगी तो आपको डेफिनेटली एकदम से क्लिक होगा.
जब आप कोई सेंटेंस सुनेंगे या क्वेश्चन सुनेंगे या कोई सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि या दिस इज द मीनिंग कमिंग आउट ऑफ दिस सेंटेंस, द स्पीकर वांट्स टू से लाइक दिस और द राइटर वांट्स टू से लाइक दिस। वो इजीली समझ में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे सेंटेंसेस मेकिंग प्रैक्टिस करना इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड ये सिर्फ हमको प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा, प्रैक्टिस से ही एकदम आपको आइडियाज हो। क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे कि ऐसी भी सिचुएशन होगी कि किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, अब आपको एकदम से क्वेश्चन सुनने के बाद समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ विल यू आंसर दैट क्वेश्चन, कैसे आप क्वेश्चन देंगे। ओके, एंड थोड़ी देर बाद जब वो क्वेश्चन चला जाएगा फिर आपको आएगा आइडिया कि अच्छा हाँ, मैं तो ऐसे दे सकती थी इस क्वेश्चन का आंसर, मैं ऐसे दे सकता था इस क्वेश्चन का आंसर। राइट, सो लेकिन पॉइंट तो वही है कि एट द स्पॉट, राइट, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट और ऑन दैट पर्टिकुलर स्पॉट जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछा गया है, वहां पे उसको क्लिक करना है। राइट, वहां पे एकदम से उसका आंसर आना है। सो एकदम से क्लिक करने के लिए, राइट, जितना ज्यादा आप यूज करते रहेंगे उतना ज्यादा वो आपको क्लिक करेगा। चलिए, सो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई एंड आई होप कि आप लोगों ने सबने करेक्टली मिसिंग पार्ट्स को फिल किया होगा। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है देन आस्क, यू हैव कमेंट सेक्शन देयर, यू कैन आस्क क्वेश्चन देयर, एंड इफ you did it correctly then wonderful. Okay, give pat, okay, pat yourself for that. And all right, I'm going to share my page with you once more. Yeah, अभी एक हम छोटा सा पॉइंट देखेंगे दैट इज रिलेटेड टू टेलिंग द टाइम। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय टेलिंग द टाइम? टेलिंग द टाइम, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू टेल द टाइम। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट टाइम इज इट और व्हाट्स द टाइम, क्या टाइम हो रहा है, क्या बज रहा है, right? Like this question, what's the time? What time is it? Okay. So you can simply say it is 1 o'clock, it is 2 o'clock, it is 2:30, it is 2:15, it is 2:20, it is 1:40, it is 1:45। हम ऐसे आंसर दे सकते हैं एंड ऑल दीज वेज आर करेक्ट। ऐसे बिल्कुल हम करेक्ट आंसर्स दे सकते हैं, बट देयर इज वन मोर वे where we tell the time। ओके, एंड वही छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे कि अ, हम कैसे टाइम को और डिफरेंट वे में बता सकते। अब ये समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ रीड कर रहे हैं, आप कुछ सुन रहे हैं और उन सिचुएशंस में आपको ऐसा कुछ टाइम से रिलेटेड टाइम ऐसा सुनाई दे। ओके, कैसा टाइम सुनाई दे? For example, if you are reading something and you read something like this, you read something like this, it is, let's say, you read 4:30. Okay, you read like this, it is 4:30. If you are talking to someone and you ask this question, what's the time? And the person says, it is 5:10। ओके, सो जब आपको ये आंसर्स मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म 4:30, 5:10, क्या मीनिंग है, क्या बता रहे हैं कि क्या बज रहा है। तो हमको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये ऐसे यूज हो, पर ये भी इम्पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कोई यूज नहीं करे। उससे लोग ऐसे यूज करते हैं, टाइम ऐसे बताते हैं। जब आप कुछ रीड कर रहे हैं तो हो सकता है आपको ऐसे ही रीड करने को मिले। ओके, सो उस सिचुएशन में हमको आइडिया होना चाहिए कि हम इसको कैसे समझना है हमको। ओके, सो इसको हम जल्दी से यही पॉइंट समझ रहे हैं कि और टाइम कैसे हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, इट इज 4:30 का मीनिंग है, आपको बताया जा रहा है दैट इट इज 4:30। इट इज 5:10, इट मीन्स इट इज 5:10। ओके, सो डेफिनेटली हम ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज 4:30, इट इज 5:10। लेकिन
तब क्या जब किसी ने ऐसे यूज कर लिया, इट इज 10 past 5। तब क्या जब किसी ने ऐसे बोल दिया, इट इज 1/2 past 4। तो उस सिचुएशन में भी तो हमको समझ में आना चाहिए अबाउट द टाइम कि हाँ, द पर्सन इज सेइंग दिस। ओके, एंड आप भी यूज कर सकते हैं, जब आपको समझ में आएगा तो आप भी यूज कर सकते हैं। आप भी इस तरह से टाइम को बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो पहले इसको समझने के लिए कुछ टर्म्स हैं जो आप देखिए, उनको समझिए जरा। Okay? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि 30 मिनट्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं हाफ। ओके, एंड 15 मिनट्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं, ओके, आई रोट रॉन्ग स्पेलिंग। 15 मिनट्स के लिए हम यूज करते हैं क्वार्टर। ओके, सो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सो जब भी आपको 30 मिनट्स बोलना है आप बोलेंगे हाफ, आपको 15 मिनट्स बोलना है आप बोलेंगे क्वार्टर। ओके, बोलेंगे इन द सेंस में, अब ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी है कि नहीं ऐसे ही बोलना है, हम ये समझ रहे हैं कि टाइम को ऐसे भी बताया जा सकता है या ऐसे भी बोला जा सकता है। ओके, अब एक और पॉइंट समझिए, लेट्स इमेजिन कि ये हमारी एक क्लॉक है। ओके, सो यहाँ पे जब आप टाइम बताएंगे यहाँ से यहाँ तक, ओके, 12 से 6 तक, तो आप टर्म यूज करेंगे पास्ट। एंड यहाँ से जब आप 6 से लेके 12 तक टर्म यूज करेंगे, टाइम बताएंगे, तो आप यूज करेंगे 2। ओके, सो 4 टर्म्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। फर्स्ट टर्म जो है वो हाफ फॉर 30 मिनट्स। सेकेंड टर्म है क्वार्टर फॉर 15 मिनट्स। जब आप इस तरफ से जा रहे हैं 12 to 6, राइट, सो पास्ट का जो मीनिंग है वो है बच के। ओके, सो पास्ट का जो मीनिंग आ रहा है वो बच के आ रहा है। एंड जब आप 6 से 12 की तरफ जाएंगे तो आप टू यूज करेंगे, इट मीन्स बचने में। सो टू का सेंस है बचने में, पास्ट का सेंस है बच के। सिंपल। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हैं कि टाइम इज समथिंग लाइक दिस, 1:05। ओके, सो आप क्या बोलेंगे? नॉर्मली हम ऐसे बोलते हैं, एक, क्या बोलते हैं बताइए? 1:05। ओके, दैट इज हिंदी, ऑल राइट। हम इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हैं, सिंपल, इट इज 1:05। ओके, 1:05। एंड इस तरह से आप ऐसे बोलेंगे, जो मिनट्स होते हैं वो पहले आएंगे। सो यू विल से 5:01। 5:01, सो मिनट्स पहले आएंगे जब आप बोल रहे हैं बच के। सो यू आर सिंपली सेइंग 1:05। ओके, एंड इफ इट इज लाइक दिस, ऑफ कोर्स हम बोल सकते हैं 1:15, दैट्स द राइट वे। व्हाट्स द टाइम? इट इज 1:15, बिल्कुल ठीक है। बट यू कैन ऑल्सो से 15 को हम क्या यूज करेंगे? 15 को हम क्वार्टर। सो 15 मिनट बच चुके हैं, सो बचने के लिए यू विल से क्वार्टर पास्ट 1। क्वार्टर पास्ट 1, इट मीन्स 1:15। ओके, सो जब आप इस रोटेशन में हैं, सो यू आर यूजिंग पास्ट फॉर बच के। ओके, सो लेट्स इमेजिन कि हम बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं 4:30। सो ऑफ कोर्स यू कैन से इट इज 4:30, बट यू कैन ऑल्सो से 30 के लिए हमारे पास क्या टर्म है? हाफ। सो यू विल से हाफ पास्ट 4। हाफ पास्ट 4। सो इस तरह से आप ये टाइम बता देंगे, राइट। सो वी आर यूजिंग पास्ट फॉर बच के। सो थोड़ा सा इस तरह से ध्यान रखना है कि दैट पास्ट वी यूज फॉर दिस रोटेशन, एंड व्हेन वी गो टूवर्ड्स दिस, okay, so then we use to and it means bachne mein। Okay, bachne mein, so for example, if you see the time like this,
5:35. So of course you can say 5:35, correct, no problem. But you can also say now you will see that how many minutes left. Okay, कितने minutes बाकी हैं? So you will see 25 minutes. किसमें? 2, 6. Okay, so you will say like this. 25 minutes बाकी हैं 6 बजने. Okay, so 5:35 you can also say like this, 25 to 6. And if it is, for example, 7:45, okay, 7:45, okay, minutes left, 15, we call 15 quarter. So you will say quarter to 8. 8 May, 15 minutes. Okay, 7:45, you can also say quarter to 8. Okay, if it is 8:40, if it is 8:40, then okay, what will you say? 20 to 9, like this. 22:09. So that's how you can also tell the time. Simple. Okay, बस यहाँ पे कुछ terms हैं जो आपको ध्यान में रखना है, and they are very easy to understand, not very difficult. Half for 30 minutes, 15 for quarter. When you say बज के, right, you use past. When you say बजने में, then you use to. Okay, easy. समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ गया है तो what is the best way to practice? The best way to practice to just do one exercise and then check your understanding. Okay, and अपनी understanding check करने के लिए आप जल्दी से यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं टाइमिंग्स, डिफरेंट टाइमिंग्स, और यहाँ पे आप जल्दी से जो अभी आपने समझे हैं टाइमिंग्स, ओके, उनको जल्दी से ट्राई करें, लिख के देखेंगे यहाँ पे. ओके, सो यू हैव टू पॉज हियर, you have to pause here and you have to mention the timing here. Okay, and then you will move forward. फिर आप आगे बढ़ेंगे. Okay, so पहले इनको कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस के लिए, जल्दी से करके देख लेंगे हमको समझ में आया, एंड देन उनको फिर आगे बढ़ेंगे. सो यू हैव टू पॉज हियर. ओके, यहाँ पे पॉज करना है. सो फॉर एग्जाम्पल, ओके, दिस वन, फर्स्ट वन, you will say 10 to 3. Okay, this you will say 10 to 4. Okay, this you will say 25 past, गुजर चुके हैं 5. You can also say 5:25, right? So we can, but we can also say 25 past 5. यहाँ पे you can also say 3:50, इसको हम 3:50 भी बोल सकते हैं, right? And you can also say 10 to 4, 4 बजने में 10. This you can say 2:50, right? 10 minutes left in 3. You can also say 10 to 3, right? 3 बजने में अभी 10 मिनट, right? So you can use this way. Okay, so you can tell the time both ways. दोनों तरीके से हम टाइम को बता सकते हैं. Now this one, so 40. Okay, 5, 10, 15, 20. 20 किसमें? 22, 8. 8 बजने में कितने मिनट बाकी हैं? 20 मिनट बाकी हैं. So you are saying 22, 8. Okay. Here 5 to 9. Okay, here 15 minutes, it means quarter. So you will say quarter past 10. You can also say 10:15. You can also say quarter past 10. You can also say quarter past 10. Okay, now easy. So this is 10 to 11. 10 to 11. You can say 10 to 11. Here you can say 5 to 12. Here you can say 5 to 1. Okay,
So that way you can tell the time. Okay, and it's very easy. But थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए आप अब जब भी टाइम देखें या जब भी किसी को टाइम बताएं तो यूज दिस वे, राइट, टू टेल द टाइम, टू आस्क द टाइम। ऐसे ही थोड़े टाइम के लिए इसको यूज करें, एंड वंस यू आर कंफर्टेबल देन नो प्रॉब्लम, राइट, देन यू कैन इजीली टेल। ओके, सो समझ में आ गया आप लोगों को कैसे यूज करना है? वेरी इजी। एंड इसमें कोई कंफ्यूजन है तो you have comment section, you can ask there, right? You have comment section, you can ask there. So simply what you have to do कि आपको बस ध्यान रखना है 30 minutes half, 15 minutes quarter, okay, and write that. So बस ऐसे ध्यान रखेंगे, and then you can also tell the time this way, okay? And ये थोड़ा सा आप लोग थोड़े दिन के लिए, एटलीस्ट फॉर अ वीक, इफ यू आर telling the time, use this way to tell the time. If you are asking question related to ask about the time, then use this way to ask about time. Okay, so this way you will be comfortable in terms of telling the time in this way also. So remember, यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर कोई आपसे एस टर्म्स में इस तरह से टाइम पूछ रहा है या बता रहा है, तो एटलीस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि yes, I know that the person is saying like this. So if someone is saying that it is 3, it is half past 4, so you should understand that the person is saying it is 4:30. If the person is saying it is quarter to 9, so you should understand that it is 8:45. 8:45 ki baat ho rahi, right? Like this. So that's why it's somewhat important in terms of understanding how to understand uh, this way to tell the time or to ask the time. Okay. ऑल राइट, चलिए, सो यहाँ पे आज हमने एक्सरसाइज कर ली। आज हमने थोड़ा सा पॉइंट ये समझ लिया दैट हाउ टू टेल द टाइम इन अ डिफरेंट वे। ओके, सो ये भी आपको प्रैक्टिस में लेके आना है, थोड़ा सा इसको यूज करते रहना है, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड इट। Okay. Now I'm going to ask you some random questions. So it will be like a rapid fire round. So where I will ask some questions, you will listen to those questions, and you will answer those questions as quickly as possible. Okay, as quickly as possible. All right, let's start. So the question is, are you in the class right now? Where is your father? How is your grandfather? How many members are there in your family? Did you have a lot of toys in your childhood? Did you have a lot of toys in your childhood? Were you free yesterday? Were you with your friends yesterday? Where were you yesterday? Do you have free time? Are you free right now? Are you stubborn? How many rooms are there in your house? How many rooms are there in your house? Will you have lots of money in future? Will you have lots of money? Do you have lots of money? Does your brother have a bicycle? Does your sister have a laptop? Does your mother have a mobile? Did you have mobile 2 years ago? Did you have time yesterday? Will you be free tomorrow? Will you be in the school tomorrow? Will you be with your friends tomorrow?
So you have to keep on answering these questions. Okay? Are you in the drawing room? Are you with your friends right now? Were you free yesterday? What's the time right now? Or what time is it? Is it cold today? Was it Friday yesterday? Will it be Friday tomorrow? Will it be warm tomorrow? Was it hot yesterday? Are you getting ideas so that to how to answer these questions? So यहाँ पे आपके लिए task यही है, as you are listening to these different questions, you are quickly answering these questions without translating these questions, without thinking about the answers. So quickly, so इसलिए यहाँ पे जो point है कि think in English. So that is the point, that if you are listening to the question, you are quickly trying to think in English and you are giving the answer in English without thinking in Hindi. So, for example, will it be warm tomorrow? So, without translating it, will it be warm tomorrow? What does it mean? Will it be warm tomorrow? So, if you are not doing that, very good. Okay. So, अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर उसको धीरे धीरे रोकना है आपको. Okay, so if you are, will it be warm tomorrow? If you are thinking in Hindi, okay, what is the meaning of this question? Will it be warm tomorrow? And then you are thinking about the answer of this question. Yes, it will be warm tomorrow. No, it won't be warm tomorrow. If you are thinking, right, so you have to लिमिट दैट पार्ट. इसको धीरे धीरे लिमिट करना है, आपको स्टॉप करना है. एकदम से स्टॉप नहीं होगा. ओके, लेकिन कोशिश करेंगे तो वो डेफिनेटली हो जाएगा. फिर देन यू विल गेट इनटू द हैबिट ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश. लेकिन ये करने से होगा, राइट? एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस ऐसे करते रहेंगे. सो दिस विल डेफिनेटली हैपन. And इसके लिए you have to do same sort of activity where you are listening to the question and you are answering the questions, where you are asking questions जब आप question पूछ रहे हैं and then somebody else is answering that question. And question पूछने के लिए if you don't have anyone with you, अगर हो सकता है कोई practice के लिए नहीं है, then you have your friend. Mirror is your friend in that situation. So just take the help of your uh, friend, and then talk to your friend, right? Talk to the mirror, right? Ask question, give answer, give ask question, give answer, and then again, if you want to give the answer, then think of the question. Okay, so it all depends on you, what you want to ask, what you want to say. So everything that way is dependent on you, कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं. So ये जो सेंटेंसेस यूज करने का जो पॉइंट आता है वो इसलिए कि आप कंफर्टेबल हो जाइए, राइट? कि एकदम से पहला पहला पॉइंट तो ये है कि हमारा ट्रांसलेशन वाला जो हैबिट है वो थोड़ा सा कम होने लगे. धीरे धीरे कम होगा, पर कम होने लगे, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं, राइट? एंड सेकंड पॉइंट ये है कि जब हम कोई क्वेश्चन सुन रहे हैं या हमको कुछ पूछना है या हमको कुछ बोलना है, तो वो हमको डायरेक्टली क्लिक कर रहा है इन इंग्लिश विदाउट थिंकिंग इन हिंदी, without translating sentences from Hindi to English, without understanding questions first to Hindi and then translating it into English. So ये सारी चीजें धीरे धीरे ये कम हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको you have to keep on putting efforts. Okay, you have to keep on trying that way. ओके, सो आज जो हमने कुछ टॉपिक्स करे हैं, वो टॉपिक्स में हमने जो टाइमिंग से रिलेटेड थोड़े से जो पॉइंट्स समझे हैं,
वो उनको भी आपको यूज करके देखना है, क्योंकि वो भी प्रैक्टिस बेस्ड ही है, एंड दैट विल इजीली कम 2-3 days में तो आप लोग यू विल बी लाइक परफेक्ट. ओके, सो समझ में आ जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज 10:40, so you will say 20 to 11. If it is 1:15, you will say 1:15. If it is 1:20, you will say 20 past 1, like this. Okay, so just take care of the time. Look at the clock, look at your watch, and then keep on telling the time from time to time. जब भी आपको ध्यान में आ जाए, जब भी याद आ जाए कि हाँ, I can use that way to tell the time. Okay, and it's good कि हमको इस तरह से टाइम का एक ऑप्शन मिलता है समझने में, बताने के लिए. सो वो भी हमको ध्यान में होना चाहिए. ऑल राइट. के एंड यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. एंड नेक्स्ट क्लास में जब हम टॉपिक्स करेंगे, तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में. लेकिन नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक नया स्टार्ट होगा, तो इट डजंट मीन कि आपको जो हमारे जो टॉपिक्स हमने कर लिए हैं उन पे आपको ध्यान नहीं देना है. नहीं, उनको तो आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस में रखने ही. ओके, जब भी हम उनमें, आपको ये समझना है कि उनमें जब भी आप कंफर्टेबल होंगे, वो प्रैक्टिस में रहेंगे, क्योंकि वो फिर हैबिट हो गई, नेचुरल हो गया. राइट, दैट यू आर मेकिंग सेंटेंसेस, यू आर आस्किंग क्वेश्चंस. सो वो आपको करते रहना है. एंड उसके लिए आपको अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड करनी है, सुनना भी है, मिरर के सामने भी प्रैक्टिस करना है, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना है, फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करना है. अपने फ्रेंड्स को बताइए क्लासेस के बारे में, उनके साथ बैठ के प्रैक्टिस करिए. यहाँ पे क्लासेस में जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं, क्वेश्चंस हैं जो, उनको बार बार एक दूसरे से पूछ के देखिए, उनके आंसर्स दीजिए. सो इस तरह से आप उसकी हैबिट हो जाएगी आपकी कि या यू आर लिसनिंग, यू आर गिविंग आंसर्स, एंड दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल. और यही एडवांटेजेस होगा हमारे लिए. ओके, एंड रिमेंबर कि लेवल 1 भी चल रहा है, अदर क्लासेस भी चल रही हैं, साइंस की, बायो की, मैथ्स की, केमिस्ट्री की. आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको इन क्लासेस के बारे में नहीं पता है और वो पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं लेसन्स, उनको बता दीजिए. उनको बता के उनको बताइए कि हाँ, ये क्लासेस चल रही हैं, तो वो भी उसकी एडवांटेज लें क्लासेस की, वो भी सीखें, समझें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करें. एंड अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी शेयर करिए. सो राइट, शेयर विथ अदर्स. राइट, शेयर करिए एक दूसरे के साथ. ओके, एंड एक दूसरे के साथ शेयर करने के साथ 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 प्रैक्टिस भी करिए एक दूसरे के साथ. ओके, and from here we will continue in the next class. Okay, everyone, bye bye, take care, keep practicing. Okay, that is important.